अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सेम वर्ड यूज एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। दैट इज हाउ वन वर्ड कैन बी यूज्ड एज अ नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और एनी अदर पार्ट ऑफ स्पीच। एक दफ़ा हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को देख लेते हैं, उसके बाद हम लेक्चर पे मूव ऑन करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद व्हाट इज अ नाउन। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, स्टेट और क्वालिटी। नाउन किसी पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का, थिंग का, स्टेट लाइक स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, होपलेसनेस, क्वालिटी का नेम हो सकता है। और नाउन किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट एक्ट करता है। Verb is an action word. Adjective describes a noun or a pronoun. Adverb describes a verb, an adjective और another adverb. Adverb किसी verb को भी describe करता है, किसी adjective को और किसी और adverb को भी. Pronoun replaces a noun. Preposition passes an action to a noun. And conjunction join words, phrases and clauses. Conjunction दो words को, दो phrases को और दो clauses को या दो से ज़्यादा words, phrases और clauses को join कर सकता है. And interjection shows emotion. Let us see first example. The word is little. अब हम देखेंगे कि little जो है वो किस तरीके से different parts of speech में use हो सकता है. We need a little to survive. इस sentence में little जो है it is a noun, क्योंकि यहाँ पे little जो है it can refer to any food. Like हमें जिंदा रहने के लिए बहुत थोड़ा चाहिए होता है. It can refer to food or anything else. सेकेंड सेंटेंस शी हैज लिटिल पेशेंस. यहाँ पे जो लिटिल है इट इज एन एडजेक्टिव, क्योंकि ये नाउन पेशेंस को डिस्क्राइब कर रहा है. शी हैज लिटिल पेशेंस. देन आई मीट हर वेरी लिटिल. हेयर लिटिल इज एन एडवर्ब. यहाँ पे ये एडवर्ब क्यों है? बिकॉज लिटिल इज एक्सप्लेनिंग द वर्ब मीट. हाउ मच डू आई मीट हर? I meet her very little. Next word is much. Much progress has been made. In this sentence much is an adjective. यहाँ पे adjective क्यों है? क्योंकि क्योंकि much जो है वो noun progress को describe कर रहा है. Much of the blood was lost during the accident. यहाँ पे much is acting as a pronoun. जैसे नाउन किसी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट एंड एज एन ऑब्जेक्ट एक्ट करता है, प्रोनाउन भी किसी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट एक्ट कर सकता है. यहाँ पे मच इज एक्टिंग एज अ प्रोनाउन. And he did not eat much. Here much is an adverb because it is describing a verb, eat. How much he didn't eat? He didn't eat much. Next word is iron. She had iron deficiency. Here iron is an adjective क्योंकि ये noun deficiency को explain कर रहा है. She had iron deficiency. Next, she ironed the dress. यहाँ पे iron verb है. क्यों? क्योंकि iron यहाँ पे as an action word act कर रहा है. So this is the reason it is a verb. In the third sentence, iron is good to stay healthy. यहाँ पे why it is a noun? Because यहाँ पे आयरन जो है वो उस मिनरल को रेफर कर रहा है, या उस मिनरल की बात कर रहा है जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है. So here iron is a noun. Next word is that. She wants that umbrella. Here that is a demonstrative adjective क्योंकि वो umbrella को point out कर रहा है. कौन सी umbrella? वो umbrella. So that here is a demonstrative adjective. That is all. यहाँ पे that as a subject act कर रहा है, but it is not a noun here, so it is definitely a pronoun. It is a demonstrative pronoun. He has tolerated that much already. यहाँ पे that is an adverb क्योंकि ये दूसरे adverb much को describe कर रहा है. He has tolerated much. यहाँ पे much जो है adverb है और that जो है he has tolerated how much? That much. So that is also an adverb here. He asked for the pendant that was displayed here yesterday. यहाँ पे that जो है it is relative pronoun क्योंकि that refer कर रहा है pendant को. Which pendant? That pendant which was displayed here yesterday.
He works so hard that he may succeed. यहाँ पे that as a conjunction add कर रहा है because it is joining two proper clauses. He works hard. This is one clause. He may succeed. That is another clause. So here that is a conjunction. Moving on, the next word is last. He came at last. यहाँ पे because last as an object act कर रहा है, so this is the reason it is a noun. The medicine will not last forever. यहाँ पे last जो है it is acting as an action word. This is the reason it is a verb. The medicine will not last forever. The last row of the stadium was empty. यहाँ पे last queue के row को describe कर रहा है. A row is a noun. So this is the reason last is an adjective. He reached last in the wedding. यहाँ पे last जो है it is describing the verb reached. So this is the reason it is an adverb. Next word is right. He took the right turn. Right turn. Turn is a noun, so definitely right is an adjective. He turned right on the junction. Here right is explaining the verb turn, so यहाँ पे right जो है it is an adverb. He will right the wrong. यहाँ पे right is acting as a verb. They were not given their right to vote. यहाँ पे right जो है it is a noun because it is acting as a object. They were not given their right. So this is the reason right here is a noun.